Hello friends, my name is Shahzan and I am from Oorja Group of Institute and I am a digital marketing coach. आज हम जानेंगे व्हाट इज एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आपने अपनी डेली लाइफ में काफी बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, वी हैव अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी और वी डू एसएमएम फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज दिस एसएमएम। तो आज के इस वर्ल्ड में ना लगभग सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। ठीक है, आप अपने खाने पीने की चीजें ऑनलाइन मंगाते हो, आप घूमने जाते हो तो ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी डिजिटलाइज ना हुई हो। बताओ, कुछ ऐसा है जो डिजिटलाइज ना हुआ हो? शादियां भी डिजिटलाइज हो गई जीवनसाथी.com। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये डिजिटलाइज नहीं हुई है, लेकिन नहीं, वो आपकी नॉलेज में कमी है, वो भी डिजिटलाइज हो चुकी है। तो भाई अब इसमें बिजनेसेस को क्या लॉस था? सब चीजें डिजिटलाइज हो गई, लेकिन वो अभी भी जो लोग थे वो न्यूज़पेपर, येलो पेजेस एंड बिलबोर्ड्स, टेलीविजन एंड ड्राफ्ट एड्स करते थे, जो उन्हें काफी कॉस्टली पड़ता था। आप कभी भी अपना ट्राई करोगे, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छप जाए या कोई ऐड छप जाए, इट्स रियली कॉस्टली। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग ने ये सब चीजें बदल दी। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव और ज्यादा वाइड रेंज ऑफ पीपल को टारगेट करती है। One thing in this digital revolution which has made the lives of business owner easy is social media marketing, as we discussed, wide range and in low cost. अब हम देखेंगे what is social media marketing, इसमें चीजें क्या क्या होती हैं। तो इसमें एक हम पहले प्रॉपर प्लान बनाते हैं, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग प्लान बोलते हैं या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बोलते हैं। फिर हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के उसमें कंटेंट रेडी करते हैं। उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंपेन्स, एड्स एंड यू कैन जस्ट सिंपली पोस्ट टू योर पेजेस। अब बात आती है इससे हमें फायदा क्या क्या होता है। इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, engage audience with the business। आपने देखा होगा सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू engage with your customers. Give brand awareness. If somebody doesn't know about your brand, social media is a great place because everyone is on social media today. Having said that about social media marketing, it's important to note social media platforms don't often release guides to their algorithms. Too much are secret. अब आपको पता होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग में काफी आपने एल्गोरिदम्स के बारे में सुना होगा और किसी को नहीं पता ये एल्गोरिदम्स क्या है। ये दे हैव बीन केप्ट सीक्रेट, क्योंकि अगर किसी को सारे एल्गोरिदम्स पता होंगे, दे चीट एंड दे विल promote their own business unethically, which is really bad. While we don't know the details of how Facebook or LinkedIn or other social media algorithms decide what to show and what not to show, as users we know for sure that, हमें पता है कि भाई अगर सबको सारे टैक्टिक्स पता चल जाएंगे तो देयर विल बी अ ह्यूज कंपटीशन। ठीक है, लोग अनएथिकली यूज करेंगे और जो कंपनीज जस्ट लाइक फेसबुक एंड गूगल अपने एडसेंस से पैसा कमाते हैं, वो खराब हो जाएगा। One of the major goals of these algorithms is to keep people scrolling the content to say they so that they see more ads and a business can show ads to get results from these channels. Simply, आप दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आप में से काफी लोग नहीं करते हो क्योंकि आप सब जनरली बच्चे होंगे ये वीडियो देखने वाले। आप पूरे दिन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट देखते हो, आपने कई बार उसमें स्पॉन्सर्ड करके कुछ चीजें देखी होगी, दैट्स एड। आप उसे स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो, लेकिन बट यू नो कि भाई ये चीज भी है एंड यू गेट अवेयर अबाउट इट। In simple terms, social media algorithms are complex logic-based programs combined with artificial intelligence and deep-level machine learning. अगर आपको एल्गोरिदम सच में समझनी है तो they are totally AI-based and machine learning. It's a combination of that, but it is really difficult to understand for a human being. Designed for understanding people's demographics, interest, behavior from their profile, information, activity, engagement, types of content, relationship, connection, network, tags, following, page and post, like, etc. These are all things
we provide to our social media platforms, and on the basis of that you can say you like shoes, that's your interest. Then you scroll your Instagram, your Facebook, you see an ad from Adidas or Nike. The Meta and Google shows you ads on the basis of your interest, and they let you know about any offer or sale have been occurring. Designed for bringing people closer and also connect business pages with audience to make these redrawings for all. It's not always huge brands who perform social media marketing, or sometimes they are small businesses, agents, you say distributors. They run ads, but they don't have audience. So the platforms help them to connect with a huge amount of audience. Here's a graph. You can see Facebook have 2.7 billion people actively using a month. Instagram have 1 billion, and on the other hand LinkedIn have 738 million. That's a huge number. And YouTube alone have 2 billion users over worldwide, and Twitter have 330 million. Here's the details. You can see which their characteristics and features. How businesses use social media marketing to engage with their audience. They perform ads, as I said before, and reach the organic and inorganic audience. What business can focus on to get results? Means what things can help a business to reach more results. Timings of the post. Yes, you should be knowing that timing plays a vital role in the audience you get. आपने काफ़ी इंस्टाग्राम कोचेज और यूट्यूब कोचेज को बोलते हुए सुना होगा 4 to 6 is a great time to post, because that's the time most of your users are actively using the platform. Use long form content. Some people might be denied from me or may disagree from me, but long video format is the best because it provides value to a user. Just like you say a 15-second video, but it will be teaching to you. On the other hand, a 1-minute video can tell you a few quick tips and hacks, but in a 15-second video you can't do that. Start conversation and encourage employees, avoid linking off. These are the really common points people lack of. They don't engage with their customers, their audience. They just come, say and go. Am I right? काफ़ी आपने इंस्टाग्राम पे लोग देखे होंगे जो आए सिर्फ बताया और चले गए. They are not giving any time to you to interact with them. So that's why they are not growing. And uniqueness. Keep your post or your content unique. That will be helping you to standing out from the rest. Just like your own tone, just like your own features, your own strategy, your own style, or your own editing style. So on Facebook there are multiple ways you can share your content or engage with your audience. Just like you can simply post a text or a photo or a video, a story. You say आपने काफ़ी आप इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे सारे. इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? yes, sir. आप जी आप ठीक है. तो इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज लगाते हैं, ठीक है. स्टोरीज पे लोग रिप्लाई करते हैं, and there is the point people start to build a conversation. And you have also seen lives, Instagram lives, Facebook lives. People create rooms, just like custom rooms. आपने सुना होगा custom rooms. They invite people and have a live conversation with them over video and audio chats. And people create pages
You know, Instagram and Facebook पे people create pages, groups to share familiar or similar content. And the last we have ads and marketplace. Ads, that what we will be talking about. Ads is a great platform where anybody, any brand can boost. Just select your audience, find out who will be watching you and who will be interested in buying from you. Identify that and just play ads. If you need any help, you can contact Oorja Group of Institute for any kind of services. I'll by myself helping in that problem. Facebook page optimization and top priorities. Facebook optimization, you know, SEO. आप सबने इसके बारे में सुना होगा, SEO के बारे में. SEO सबको लगता है कि सिर्फ वेबसाइट पे होता है, ब्लॉग्स पे होता है, बट नो, सोशल मीडिया पे भी SEO होता है. Cause what does SEO mean? Search engine optimization, not Google optimization. Okay. So and you know, people are more likely to search on Instagram and YouTube for about a product or a trend rather than a Google. So how will we doing SEO on Facebook or Meta or you say YouTube? Will be learned in the further videos. I'll get the videos for you if we have 100 likes in this video. And we will be sharing multiple content strategy and social media strategies with you, and I'll personally tell you in your DMs that how will you execute them and make a proper content calendar with you. Just stay tuned. Let me share some tips about the social media calendar. Keep these things in mind that you will be creating content for the future. So keep in mind what could possibly happen and what could possibly people will be willing to see in the future. Not in that much future, you say 1 month or 1 week. You can just see trending content that is going to bloom for just like 2-3 times, but you see there is a potential that it could go viral in a week or in a month. You can create similar kind of content or create that type of content that can go viral. And I'll be personally sharing my content type cheat sheet. So don't forget to subscribe our channel. You can see we have created multiple content planners and calendars for you all. So let's talk. हम अभी फिलहाल ऊपर से बात करते हैं. हम इन सब टॉपिक्स के बारे में जितने भी अभी तक हमने डिटेल में बात नहीं करी है जिनके बारे में, उनके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे. तो जस्ट स्टे ट्यून. अब यार हमने सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस भी बना लिया, हमने एसईओ भी कर लिया, ठीक है, हमें पता भी चल गया कि मैं कंटेंट कैसे कैसे डाल सकता हूँ, बट हाउ विल आई मेजर द रिजल्ट्स? सो दैट्स वेयर वी गोना चेक आवर एनालिटिक्स. In analytics, you see different types of categories, features, demographics, on what basis you want to see results on whatever in a particular period of time, in what basis you can customizably see that. So that's for all. We'll be learning more about these topics in a deep. So just stay connected.